Okay, welcome to the 1 month before exam series. And today our first topic is real numbers. The first chapter from 10th book is real numbers. This chapter consists 2-3 subtopics and carry 6 marks. The easiest marks from your book is these 6 marks. By learning only 2 or 3 topics, you can score full 6 marks. Okay, start करते हैं real numbers. Real numbers consist 2 kind of numbers, that is rational numbers and irrational number. Okay, first of all, we should able to identify the rational and irrational number. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन अगर आपको आती है उसके बाद ही हम द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0, और यू कैन से विच आर टर्मिनेटिंग इफ टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो irrational numbers are the numbers which are non-repeating and non-terminating and which cannot be written in the form of p by q. Let's for example root 2, root 3, pi, or a lot of there. Rational number आपका 1/2, 2/3, जैसे 1/2 is terminating but 2/3 is not terminating. First of all, there is a 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आता है कि बताइए ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा. तो वहां से यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई बाय सीइंग द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर शुड बी फैक्टर ऑफ 2 and 5. अगर मैं बोलता हूं 1/75, is it terminating or non-terminating? First you will make a prime factorization of 75. This will be 5 into 5 into 3. अगर डिनोमिनेटर में अदर देन 2 और 5 का कोई भी फैक्टर आ जाता है तो मीन्स दैट नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग. Sometimes examiner play a cheat with you. He will give 3/75. Check whether 3/75 is terminating or non-terminating. First, you should reduce the expression in least form. Then only you should factorize the denominator. Okay. The next subtopic is numbers between. You should able to find the numbers between rational numbers and number between irrational numbers. Let's take a 2 rational number. Let's 2/3 and 5/4. You have to find 2, 3 rational number between them, or it may be asked to find the irrational number between them. यहाँ पे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो आपको 7th 8th ग्रेड से आपको पता है एड 2 डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत सारे आपको सबको आता है. बट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो इनके बीच में तो फर्स्ट डिड्यूस दिस इनटू 2 डेसिमल फॉर्म. यू कैन राइट दिस एज ए 66666 or you can 1.25. Write 2 irrational number between them. तो irrational बनाने के लिए आप कुछ भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आपको लिखना है. मेक एनी पैटर्न इसके बीच में और इसके बीच में 7 0 7 0 0 7 0 0 0. डॉट डॉट लगाना मत भूलिए, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज terminating, or if it is terminating
दैट वुड बी रैशनल। तो और इसके बाद और भी कोई नंबर कहीं भी, देयर में बी इनफाइनाइट सच नंबर्स बिटवीन टू रैशनल, और समटाइम्स √2 and √3, these two number are irrational। वो ये भी पूछ सकता है इनके बीच में दो इरेशनल नंबर बताइए। तो आपको सोचना है द नियरेस्ट वैल्यू 1.414 of √2, approximate value 1.732, and you can write 1.515111511, so on. You can write similarly many number between rational and irrational. Sure short question, proof of irrationality। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोसीजर है, उसको याद कर लीजिए। इट्स लाइक यू हैव टू प्रूव दिस इज अ पेन। फर्स्ट यू विल कंसिडर इट्स अ पेंसिल। दिस काइंड ऑफ प्रूफ इज नोन एज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और बाय योर thoughtfulness or by your previous knowledge you will prove that this is not pencil। ultimately it will be a pen। अगर दो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं दुनिया में, पेन और पेंसिल, अगर पेंसिल नहीं तो जैसे रैशनल नंबर नहीं है तो डेफिनेटली दूसरा नंबर इरेशनल ही होगा। सिमिलरली लेट्स टेक ए प्रूव दैट √2 is true, √2 is a irrational। स्टार्ट करोगे आप, ये क्वेश्चन आना ही है, इसमें भी अगर आप कोई कोताही बरत रहे हो तो इसका मतलब जस्ट यू डोंट वांट टू लर्न। लेट्स √2 इज अ रैशनल नंबर, और यू कैन √2 इज इक्वल टू a/b और p/q। b should not equal to 0 and a and b are co-prime। a and b are co-prime बिकॉज हमने इसको रैशनल माना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 b इज इक्वल टू a। इफ यू स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। Means to say, if a 2 is multiplied with something to get a square, definitely a square is the factor of 2। This is some constant number, let's b square is some constant number। तो a square 2 से डिवाइड हो रहा होगा श्योर शॉर्ट। तो आप यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और लिखोगे if a square is divisible by 2, then a is also divisible by 2। a स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो a भी डिवाइड होगा। तो सिमिलरली यू कैन राइट a is equal to 2c। what is c here? c is another some नंबर। जब आप a को 2 से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई तो आपका क्वेशंट बचेगा, c इज दैट नंबर। तो यहां पे आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां पे लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास 4c बचेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये नंबर इट एज अ 2। By equation 1 and 2 you can substitute a square can be written as 4c square। substitute this value into this, you can conclude that a square can be written as 4c square। 2 will get cancelled with 2। this means b square is also divisible by 2। इससे ये पता लग गया b square भी, क्योंकि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो डेफिनेटली b स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा।
Same you will write here, b square is divisible by 2. So ab is also divisible by 2. एंड हमने ये माना था they are co-prime, but they are no co-prime, they both are divisible by 2. तो आप ये पूरी स्टेटमेंट लिखोगे a and b both are divisible by 2, hence they are not co-prime. They are not co-prime. So our hypothesis is wrong. जो हमने माना था उनको रैशनल माना था वो wrong हो गया. Hence root 2 is the irrational number. This proof is known as proof by contradiction. Similarly, you can prove root 3, root 5. You can practice at home. एक और कर लीजिए. अगर आपको एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन आ जाए 2 plus 3 root 2, prove that this is a irrational number. What you will do? If this question carries 3 marks, so first prove this root 2 is a irrational number. Then after then you can conclude if a root 2 is irrational number, if a irrational is multiplied with any rational, it will make irrational. So this number is also irrational. Otherwise, take this as a rational. 2 plus 3 root 2 is equal to a by b. इसी को रैशनल लेके आप कर सकते हो और उस तरफ जाएगा तो 3 root 2 is equal to a by b minus 2 और root 2 is equal to a by b minus 2 by 3. सिंपली सॉल्व करके आप सीधा लिखिए hence this can be written in a p by q form or a by b form. This is a rational. Rational cannot be equal to irrational, or we are already aware that root 2 is irrational. Hence this number is also irrational. Okay, this part is also concluded. Next is for last 2-3 years it has been observed that this always the question is coming from this relationship HCF and LCM. You are studying this concept from 4th, 5th grade, 6th grade, HCF or LCM. LCM is lowest common multiple and HCF is highest common factor. फैक्टर है इसलिए छोटा होता है, देखने में इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू एलसीएम से हमेशा छोटी होगी. और सबसे पहला रिलेशनशिप आप याद रखोगे दैट HCF of two number, let's A and B are two numbers. HCF of two number multiplied with LCM of two number is always equal to product of two numbers. You will be given sometimes product or a two number or one of LCM or HCF out of 4 things. There are 4 things. Two numbers, LCM or HCF. Out of 4, 3 will be given or sometime product will be given. You will be asked to find the other. And one more important thing is LCM is always divisible by HCF. Sometimes it may be question if a LCM of two number is HCF of two number is 7. HCF of two number is 7. What could be the LCM option दे देगा 30, 35, 40, 45. Definitely answer will be 35 because 35 is multiple of 7. Other
and none of the other is a multiple of 7. Definitely you are going to get a 1 mark, 2 mark question from this relationship, not it. Third one is word problem, word problem related to LCM and HCF. This is also quite evident from last few year question papers. एक ऐसा पूछेगा, ये एक रैक है, सपोज ये रैक है, there are two racks, there are two racks of a different height. Let's, this is a height of 30 centimeter and this is height of 25 centimeter. What is the biggest size book या उसकी जो कितनी मोटी किताब, कितने सेंटीमीटर मोटी किताब इन दोनों में फिट हो जाएगी? तो इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द HCF. 5 सेंटीमीटर की बुक होगी तो इसमें 6 फिट हो जाएंगी, इसमें 5 आ जाएंगी. इस टाइप के केस में यू हैव टू रीड द this word problem very carefully or identify whether you have to find the LCM of there or a HCF there. ये और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जहां LCM होगा. Sometime you might have gone through the such questions earlier. एक बेल बजती है एट द इंटरवल ऑफ 5 मिनट, दूसरी बजती है एट द इंटरवल 8 मिनट, तीसरी बजती है एट द इंटरवल ऑफ 10 मिनट एंड और चौथी भी हो सकती है, पांचवी, और दे आर रिंगिंग एट पर्टिकुलर टाइम. 9 बजे सारी एक साथ बजती हैं और फिर दोबारा किस टाइम पे वो फिर बजेंगी. मीन्स वन इज रिंगिंग एट द इंटरवल ऑफ 5 seconds, other is ringing at the interval of 8 seconds, and third one is ringing at the interval of 10 seconds. Definitely कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 5, 8 and 10 का तीनों का मल्टीपल हो, so that they will ring at the same time. तो what will be the number? The number will be 40. 40 second, after 40 second again 3 bell will ring, or it can be given in minutes or hours, whatever the question. Read the such question very carefully, it will be very easy. And last concept of this chapter is Euclid algorithm and factor tree. Euclid algorithm आपको जब HCF निकालना होता है, 2 नंबर दिए तो आप A को यहां रखते हैं. अब A इज ग्रेटर देन B, A को यहां रखते हो, B से डिवाइड करते हो, फिर यहां कुछ रिमाइंडर आता है, फिर B को यहां रखते हो, फिर कुछ रिमाइंडर आता है, फिर जो इसका क्वेश्चन आता है, इसका जो क्वेश्चन आएगा उसको वहां रखोगे. इस तरह का कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और उसमें फैक्टर ट्री कैसे फिलअप करते हैं अभी उससे भी कई बार देखा गया. और सिंस दिस चैप्टर इज कंसिस्ट ओनली 6 मार्क्स, probability is this, that case study question will not appear from this chapter. Okay, we'll take one question from this factor tree. Okay, suppose this is 140, this 2, ये fill in the blanks करना है आपको. This again 2, this is 335 and this is 7.
Simply 35 is the multiple of 7 and 5, and this will be the multiple of 35 and 270, and this सच 1 और 2 मार्क्स और थोड़ा सा लेंदी भी आ सकता है, इस चीज पर आप फोकस करना. इन माय व्यू देयर विल बी नो क्वेश्चन apart from these subtopics, and you can get 6 out of 6 from this chapter. And next video will be of from polynomial. Thank you. Like, subscribe.